Hello everyone, welcome back. This lecture is for class 7th, chapter number 2, Nutrition in Animals. And in this video, I come with some important terms which are beneficial for exams point of view. So watch and listen carefully the video till end without skipping any point. So let's moving ahead. First point which I want to discuss, that is the chapter, as the name of the chapter, that is the nutrition in animals. So how digestion process is completed in our body with the helping of different regions and organs of our body. So in digestion we can say, as you are able to see in first point I have mentioned, that breakdown of complex components of food which cannot be utilized by our body into simpler and absorbable substance is called digestion. So what do you mean by digestion here? Digestion, it means whatever food we are eating, suppose it generally comes in solid form, right? Solid or hard form, it means complex component में होता है which we cannot easily swallow it and digest it easily in our body, in our different organs in our body. फाइन. सो पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सिंपलर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही डाइजेशन कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल to having complex components of food in our mouth. If you are keeping in mouth, and easily it will be digest, or easily it will be turned up into different components like nutritions, isn't it? So digestion is the process by which complex components breakdown will be completed with the help of different organs of our body. Next, that is ingestion. The process of taking food. It means whenever digestion process is going to start, तो पहले तो हमें फूड हमारे माउथ में रखना होगा, है ना? तो फूड को सबसे पहले जो माउथ में रखने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. हियर इंजेशन, इट मीन्स माउथ. हियर माउथ का मीनिंग बकल कैविटी भी कहते हैं. व्हाट इज ingestion? Whenever we are putting any food components in mouth or buccal cavity, that process is known as ingestion. Next, absorption. The passage of digested food into the blood. The passage of digested food into the blood vessel is called absorption. It means blood vessel में जो भी digested food का पैसेज है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. एज वी नो दैट मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो सारे डिफरेंट ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट, एसिमिलेशन. The process in which the absorbed food is used for producing energy. Now, as we know, whatever we are intaking our food, from that food we are getting some nutrition, isn't it? And after the getting nutrition, from these nutrition we are getting energy, which is used to, which is helpful to we people to complete to our day-to-day activities like playing, running, walking, dancing, eating, reading, writing, and so on, right? So this many activities we are only able to complete with the help of energy, and which we are getting from nutrition, isn't it? So by this assimilation process, what happens? Absorbed food जो होता है उसको absorbed food is used for producing energy. इस पार्ट में, बॉडी के इस पार्ट के अंदर जो फूड को कन्वर्ट करके एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है एंड ग्रोथ, दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड ग्रोथ इज कॉल्ड assimilation. सो वी कैन से द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड. इट मीन्स जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उससे हमें एनर्जी मिली, है ना, और वो एनर्जी और ग्रोथ के लिए वो एनर्जी का यूज़ हुआ, दैट इज कॉल्ड assimilation. The absorbed food components are transported by the blood vessel, that you already know that कि जो भी फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ वो फर्दर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स इन द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स. इवन इन टिश्यूज़, हमारे बॉडी वेसल्स किसके बने हुए हैं? टिश्यूज़ इज मेड अप ऑफ सेल ब्लॉक्स, राइट? सो ये सारे एरियाज़ में ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है.
Cells utilize the simpler components of food to build complex substance. Again here what will cells and tissues will do? Cells utilize the simpler component, that is already digested food, that is already complex components से simpler components में जो convert हो गया food, वहाँ उसका वापस utilize किया जाता है किस में? Again to build up such as proteins. Again to build up complex substance such as proteins. This process is known as assimilation. Next, egestion. Egestion is the last part where undigested food is removed. The removal of undigested and unabsorbed food material. हमारे body से जो भी undigested food है और we can say जो unabsorbable food है by our body parts, वो सारा food material को बाहर throw करने का काम किसका है? Egestion. Through the anus from time to time is called egestion. Is it okay? Next point is amino acid. These are the acids, such type of acids like in stomach में कुछ different special glands होते हैं, है ना? And now you are getting that what is the glands? Glands is a we can say one type of organ, right? Means collection of tissues. Tissues against tissues means again here the meaning of cells. Tissues किसके बने हुए हैं? Cell के. So we can say stomach having lots of cells, बहुत सारे cells होते हैं जहाँ पे क्या क्या होता है? Gastric glands here which releases enzymes, है ना? तो stomach में different glands होते हैं जिसकी help से enzymes release होते हैं. Another hydrochloric acids, digestive juices, these all are releases by the stomach or which all are act on the food. So amino acids are the building block. It's a very small unit which combine to form complex molecules like protein, which combine to form complex molecules like protein. protein molecules complex molecules को combine करके इसको फॉर्म करने के काम में आ सकता है. नेक्स्ट, बकल कैविटी, द कैविटी ऑफ माउथ विथ ऑल इट्स इंटरनल पार्ट्स. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट माउथ्स अनदर नेम वी कैन सी दैट इज द इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कैन सी इट इज बकल कैविटी, वेयर वी कैन इंक्लूड इन बकल कैविटी माउथ all internal parts like cheeks, teeth, tongue and salivary glands. These all come in the category of buccal cavity. The alimentary canal that is named by digestive tract begins from the buccal cavity. Obviously we know as we are at the time of ingestion we are putting the food in our mouth, means buccal cavity में जैसे ही हम अपना food को रख रहे हैं तो यहीं से ही हमारा food का digestive system का process start होता है. Okay, next here the figure is given that is liver. As you are able to see here, liver, esophagus is the food pipe which is connected with buccal cavity, and downside of the esophagus there is liver. The liver is a reddish brown gland. Liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. Right side में आप देख रहे हैं जहाँ पे abdomen के ऊपर situated होता है. It is largest gland in the body. And again it secretes bile juice. What is secreted by the liver? Liver secretes bile juice. And what is the use of this juice? This juice helps in to digestion of fats, right? This juice helps in digestion of fats. Next, as you are able to see here is the alimentary canal. It means food pipe is given that is named by esophagus, है ना? So esophagus is also known as food pipe. The swallowed food, whatever we are swallowing the food in our mouth, that go through this food pipe. ठीक है? The swallowed food passes into the esophagus which runs along the neck, the chest. नेक और चेस्ट के थ्रू वो नीचे धीरे धीरे पुश डाउन होता जाता है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप. नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, फूड पाइप का क्या काम है? उसकी जो वॉल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट इसेंट, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर इसाल्टेशन होती है. कॉन्ट्रैक्ट इसेंट elastation, contract elastation. This process is going on by the walls of the esophagus, and by this process, by this way, the food is pushed down from the food pipe.
This movement takes place throughout the alimentary canal to push the food downwards. ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? कॉन्ट्रैक्शन और इलास्टेशन का, इसके कारण ही फूड पाइप को नीचे पुश करने में हेल्प मिल पा रही है, जिसके कारण नाउ फूड विल गोज डाउन थ्रू द food pipe, it will go down into the stomach. That is important again part of our body. Now food is moved down in the stomach. Next figure, you are able to see this figure shows stomach, liver and pancreas. Esophagus, this side left side is the stomach and right side is the liver, and pancreas. The pancreas is a large cream colored gland. What is pancreas? As you are able to see the leaf like structure that is seen down the common stomach. स्टमक के नीचे वाले पार्ट दैट इज सीन लाइक अ लीव्स लाइक, है ना, लीफ के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज पेनक्रियास. पेनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. ओके, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द पेनक्रिया? पेनक्रिया अगेन क्रिएट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, अगेन इट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूसेस एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड proteins. So what is the work of the pancreas? Pancreas function is that it releases such juices are named by pancreatic juices, and these juices are help in the digestion of carbohydrate, fats and proteins. Okay, in next figure as you are able to see we have started from buccal cavity जहाँ पे salivary glands होते हैं. And what is the work of the salivary glands? Salivary glands create releases saliva. Okay, and this saliva contains enzyme, है ना, which break down the starch into sugar into mouth. क्या होता है? salivary gland saliva create कर रही है, सलाइवा क्रिएट कर रही हैं, रिलीजेस कर रही हैं सलाइवा को. और सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा जिसके साथ विच कंटेन्स एंजाइम्स, इट ब्रेक्स डाउन, इट हेल्प इन ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर इनटू द माउथ. सो वी कैन से शुगर और स्टार्च का ब्रेक डाउन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? माउथ में, इन बकल कैविटी. ओके, so or in another word we can say carbohydrate digested only in mouth area or buccal cavity. Okay, next we have talked about liver, gland, stomach, pancreas. After pancreas the food goes into small intestine and then large intestine, and then we talked about egestion, where removal of undigested food goes down by this area, that is called anus. Fine. Next is the important part, that is of our mouth. Are you able to see by this picture? There are arrangement of different types of teeth in our mouth. There are different types of teeth. Basically it is जब हम एकदम बेबी एज में होते हैं उस टाइम हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं ना. एट द बेसिस ऑफ द टीथ वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ. टेम्पररी टीथ विच आर ऑल्सो नोन एज द मिल्क टीथ, इजंट इट? मिल्क टीथ होते हैं, और लेकिन बाद में मिल्क टीथ एक बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो टीथ आते हैं दैट आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, दैट आर एडल्ट हैविंग, है ना. एंड वंस एडल्ट टीथ इज ब्रेक डाउन इज ब्रेकिंग, so it is not possible that it come later again. So teeth help in chewing the food. teeth का क्या काम है? food को chew करना, break down the big pieces of food into small pieces. Now each tooth is rotated in a separated socket in the gum. हर एक टूथ कैसे रोटेट किया होता है? सेपरेट सॉकेट से इन द गम. As we know there are two jaws, upper jaw and lower jaw in our mouth, है ना. और हर एक jaw को again two parts में divide कर सकते हैं. As you are able to see, जो एकदम सेंटर में हमें टीथ दिख रहे हैं, हमारे सामने जो माउथ ओपन करते ही दिखते हैं, that is the center of the teeth, that is incisor. Means half of the jaw में we can say two set of the incisor, है ना. इट मीन्स डाउन साइड टोटल 4 इंसिसियर है, और अपर साइड अपर जॉ में अगेन 4 इंसिसियर. सो वी कैन से देयर आर टोटल 8 इंसिसियर. और अगर हाफ ऑफ जॉ कर लें, इट मीन्स किसी हमारे पूरे जॉ जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर एंड लोअर, इफ़ वी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, इट मीन्स हाफ ऑफ जॉ ऑफ द पार्ट. सो देयर वी कैन से इन फॉर्मेलिक मेथड 2 1 2 3. It means 2 incisor. After then you are able to see 1 canines.
है ना. 2 incisor हाफ जॉ की हम बात कर रहे हैं. 2 incisors, then 1 canine is again 2 premolar and 3 molar. So we can say 2 1 2 3. Half of the jaw in formula method we can say, dental formula we can say 2 1 2 3. It means incisor 2, canine 1, then premolar 2, then molars 3. Again in half section similar way, 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 are molar. Same in upper jaw. Fine. So this is the set of the teeth. Fine. So almost we have completed of the main top points of this chapter, and these are very much important of the exams point of view. So hope so you all have understood the topic. So till here we are completing the session. In next video lecture we will meet with another topic, with another an interesting topic. Goodbye. Till that, goodbye. Take care.